Hello दोस्तों, this is Harshit and welcome to Anglify 30 Day series. And today we are at 21st day of our journey. We are going to learn about mock interview, situational and behavior questions. Okay, एक second. I hope my screen is visible to everyone. Okay. तो मॉक इंटरव्यूज के बारे में हम जानेंगे सिचुएशनल और लाइक बिहेवियर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे हम और की टेक अवेज उठाएंगे। ठीक है। ओके, तो today we are going to deep dive into what many job seekers find the most challenging part of an interview, behavioral and situation questions. So these aren't just about what you know, but about what you have acted in the past and how you would act in future scenarios. So they are designed to assess your soft skills, problem solving abilities, and cultural fit. Many people fear these questions, thinking behavioral questions instant fail. Okay. But with the right preparation and strategy, they can be your biggest opportunity to shine. All right. So today we are going to conduct a guided mock interview breakdown. Okay. I'll present typical behavioral and situational questions, and then I'll walk you through how to structure your answers using the powerful STAR method, which is situation, task, action, result. Okay. Complete with expert English phrases. Okay. तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? Like question one is basically dealing with a difficult colleague or customer. ठीक है, मतलब हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि how to deal with a difficult colleague or customer maybe. ओके, तो टाइप, ठीक है, तो बिहेवियरल लाइक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरपर्सनल स्किल्स और कस्टमर सर्विस. इंटरव्यू इज गोल to see how you handle conflict, maintain professionalism and problem solve under pressure. What to avoid? Blaming the other person, getting emotional, or saying you have never had such an experience. Okay, so these are the like situations you may have to encounter. Wait, guys, I think some issues. Okay, sorry. Mhm. Okay, so applying the star method is a basic requirement for every interview questions. तो situation, ठीक है. Set the scene, which is S, situation as in S. Okay, star का S. In my previous role as a digital marketing expert at ABC company, I encountered a situation where these are the things happened. ठीक है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें आता है ना कि एज डिफिकल्ट कस्टमर से डील कैसे किया था, तो तुम बताओगे ना सिचुएशन, तो दिस इज दैट थिंग। ओके, और स्टार में टी एज इन टास्क। ठीक है, तो डिस्क्राइब योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, माई टास्क वॉज टू बेसिकली गेट these many customers in this month. Okay, मतलब basically achieve एक specific goal होगा तो उसको बता दो. My task was to achieve a specific goal despite the conflict. एक्शन क्या लिया आपने, है ना? ए, detail the steps you took. Okay, I decided to like specific action के लिए I decided to schedule a private meeting, listen actively, propose a compromise, use strong action goals. ठीक है, और result as in R, स्टार का आर रिजल्ट है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द पॉजिटिव आउटकम, एज अ रिजल्ट वी वर एबल टू अचीव दिस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप प्रोजेक्ट जो भी हुआ। ठीक है, तो स्टार मेथड, इस स्टार मेथड से हर चीज समझाया करो कि सिचुएशन क्या थी, आपको टास्क का मिला था, आपने एक्शन क्या लिया और रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बताना होगा। ओके, तो आंसर एक्सपर्ट इंग्लिश आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल है ये. Certainly, in my previous role as a project coordinator, I was managing a project with a tight deadline, and one of my team members consistently missed their deadlines, causing a bottleneck for the entire team. This put the project at risk. My task was to address this issue and ensure we met our overall project commitments without alienating a value team member. मतलब बेसिकली किसी को निकाले बिना या है ना ह्यूमिलेट किए बिना.
I approached the situation by first scheduling a private one-to-one meeting with a colleague. I began by expressing my understanding of their workload. Then clearly and calmly articulated the impact their missed deadlines were having on the project timeline and the team's overall progress. I actively listened to their perspective, which revealed that they were overwhelmed with an expected personal matter. So together we brainstormed solutions. I offered to redistribute some of their tasks temporarily and help them prioritize the critical items. एक सेकंड दोस्तों. ठीक है. तो यहाँ पे हाँ रिजल्ट बताना है ना आर. As a result, we successfully got the project back on track and delivered it on time. More importantly, my colleague felt supported, and our working relationship actually strengthened, fostering great trust and communication within the team. All right. Okay. And second question is basically handling mistakes. So, sorry. Behavioral type है सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, रेजिलियंस. ठीक है, ये बिहेवियर होना चाहिए आपका. रेजिलियंस मतलब यू शुड लाइक नॉट गिव अप समथिंग ऐसा. हाँ, यू शुड बी फर्म, स्टर्न. Interviewers goal to assess your honesty, humility, ability to take responsibility, and capacity for growth. What to avoid? Saying you have never failed, blaming others, or choosing a mistake that shows a like critical lack of competence for the job. मतलब इस टाइप की चीजें नहीं बतानी जहाँ पे आपने कुछ वैसे बहुत गंदी गलती करती हो, तो नेगेटिव ही जाएगा ना. अपने बारे में बुरा बताओगे तो दूसरे वाले सामने वाले को बुरा ही लगेगा. अगेन स्टार मेथड अप्लाई करो. ठीक है. सिचुएशन है ना, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन द task, explain what you were है ना trying to achieve. Action, detail the steps you took to correct the mistake and what you did afterward. और result में focus heavily on the learning and how you have applied it since. Okay. So example है, of course, in my early in my career as a junior data analyst, I was responsible for like preparing a crucial report for a client presentation. Due to an oversight, I made a small error in one of the like data sets. Okay, which while minor, but could have led to like incorrect conclusions. So my task was to ensure that the report was accurate and reliable for the client's strategic decisions. So when I realized the mistake during final review, I immediately informed my manager that like I explained the error properly and like proposed a corrective action plan to re-verify all the data points and rectify the report before presentation. Okay. So I worked extra hours to ensure like the revised report was flawless. So as a result, the report was corrected in time and the presentation went smoothly. But the key learning for me was like the absolute importance of meticulous attention. Okay, I just have to maintain attention to detail and implementing multiple layers of review even for seemingly small tasks. Since then, I have developed a rigorous double checking system for all my data analysis. Okay, like which has significantly improved the accuracy and reliability of my work. ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेते रहना आप टाइम टाइम पे. प्रायोरिटाइजिंग वर्क, थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, कैसे प्रायोरिटाइज करते हो आप बेसिकली. तो टाइप इज लाइक सिचुएशनल, बिहेवियरल, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. हाँ. इंटरव्यूअर्स गोल को समझो कि टू अंडरस्टैंड योर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इंटरव्यूअर को गोल ये है टू अंडरस्टैंड योर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, योर एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस एंड योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. व्हाट टू अवॉइड, सेइंग यू गेट ओवरवेल्म्ड, डोंट प्रायोरिटाइज. ये सब नहीं करना, ये सब वर्ड यूज नहीं करना. डोंट प्रायोरिटाइज, ओवरवेल्म और कांट हैंडल मल्टीपल टास्क, ऑल आर नेगेटिव. ओके. Again, the star method applying. Okay.
सिनेरियो डिस्क्रिप्शन करो, ठीक है। टास्क चैलेंज, एक्सप्लेन द चैलेंज ऑफ जगलिंग टास्क। प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रेटजी है ना, कि डिटेल और स्पेसिफिक प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रेटजी, लाइक लिस्ट, कम्युनिकेट, डेलीगेट कैसे किया, एसेस इम्पैक्ट। हाँ, और पॉजिटिव आउटकम क्या निकला उसका रिजल्ट जो है, ठीक है। एक्सप्लेन द पॉजिटिव आउटकम, एग्जांपल लाइक वी मेट डेडलाइंस, रिड्यूस स्ट्रेस, है ना, जो भी है। तो आओ देखते हैं इसके एग्जांपल। This is a very common scenario in my expertise, especially in like fast-paced environments. For instance, my role as a marketing coordinator, I often had to juggle like multiple campaigns, campaign launches, content creation, and urgent client requests. So all with overlapping deadlines. So my task was to like ensure all critical deliverables were met on time and with high quality without compromising on any objectives. So my approach involves a systematic process. First, I immediately like list all pending tasks and their responsible like respective deadlines. Second, I assess the urgency and importance of each task and considering its impact on overall project goals and stakeholder expectations. Third, I communicate proactively with stakeholders if I foresee any potential issues or need to negotiate revised timelines for less critical tasks. I also utilize productivity tools like Trello or a simple spreadsheet to visualize my workload and track progress. ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे, by the way, if you are listening to me, guys, ये जो ट्रैक करने का है, मतलब हमेशा हर चीज याद रखना, आगे भी काम करोगे जब हर चीज डॉक्यूमेंट करोगे। जो दिमाग में रखने वाली चीजें हैं ना, वो बहुत आउटडेटेड है और अब लोग नहीं रख पाते। आपके पास लिखने का तरीका जब है, और इवन आपको लाइक बाहर भी मतलब है ना, अगर या तो आप लिख सकते हो या तो आप है ना मतलब डिजिटल में कहीं सेव कर सकते हो। तो ऐसे शीट है, तो शीट में वो चीज सेव करो, जो भी आपके टास्क है ना प्रायोरिटी पे, तो उसको प्रायोरिटी वाइज आप वहाँ पे लिख के रखो, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल डू थिंग्स। हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में सही हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है ना। बट तब तक आप हमेशा लिख के रखो, जस्ट टू इवन शो द मैनेजर कि हाँ मतलब ये टास्क मैं डेली करता हूँ, बिकॉज दे कैन कम एनी टाइम एंड आस्क यू कि आप क्या करते हो बोलते हैं, ठीक है। तो इफ पॉसिबल आई विल डेलीगेट और सीक सपोर्ट फॉर नॉन टेक क्रिटिकल टास्क। एज a result, I have consistently been able to meet all primary deadlines, manage stakeholder expectations effectively, and maintain a high standard of work even during peak periods. So this systematic approach ensures that high priority tasks are always given the attention they require. All right. Demonstrating leadership. Okay. So behavioral leadership initiative influence. Okay. गोल क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप, ये क्वेश्चन है, बट ठीक है, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो अपना लीडरशिप, कैसे आपने वो किया है। उसका गोल इंटरव्यूअर का, टू सी इफ यू कैन टेक इनिशिएटिव, मोटिवेट अदर्स एंड गाइड सिचुएशन विदाउट नीडिंग अ टाइटल। सो व्हाट टू अवॉइड सेइंग यू हैव नेवर लेड और ओनली डिस्क्राइबिंग लाइक फॉर्मल लीडरशिप टास्क। अगर आप नए हो, मान लो अगर आप लाइक इफ यू आर अ फ्रेशर गिविंग इंटरव्यू, देन इट्स ओके, ठीक है। तब भी आप कॉलेज का कोई इवेंट ऐसा अगर आपने किया हो, तो आप वो बता सकते हो कि हाँ ठीक है। इवन स्कूल में भी आप लीडरशिप देखो, हर जरूरी नहीं है कि कंपनी में ही किया हो, आप ना अपने टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ लीडरशिप करते आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको बस समझाना सिखा दो, जरूरी नहीं है वो काम से रिलेटेड ही हो, बट लेकिन आप बता सकते हो। अगर कॉलेज में भी आपने मतलब मान लो एक कोई प्रोजेक्ट की टीम बनी थी, आपने उसको लीड किया है, तो वो भी बताने का तरीका जो होता है ना, उससे समझ में आ जाता है इंटरव्यू को कि हाँ ये बंदा ही कैन हैंडल थिंग्स, ठीक है। और अगर कंपनी में ऑलरेडी कर रखा है जॉब और टीम नहीं लीड की है, तो भी आप कुछ ना कुछ सिनेरियो बना दो, बिकॉज आपको ध्यान नहीं आएगा अगर आप ध्यान से सोचोगे। हमेशा किसी ना कुछ जगह कहीं ना कहीं कोई टीम लीड कर रहा होता है, ठीक है। लीड जरूरी नहीं है कि आपको लीड बना ही दिया है, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट है, 4 लोगों आपने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, किसी को मोटिवेट भी किया, दैट इज ऑल्सो काउंट एज अ, है ना, इन लीडरशिप बेसिकली। स्टार मेथड अगेन, सिचुएशन, describe a team project or challenge where you weren't the designated leader। हाँ, ये है मेन, ये एक्चुअली कि डेमोन्स्ट्रेट करना है लीडरशिप ना, यही मैं बोल रहा था कि जब आप डेजिग्नेटेड लीडर नहीं हो तब आपने क्या लीडरशिप की। हाँ, टास्क, तो एक्सप्लेन व्हाट नीडेड टू बी डन और व्हाट प्रॉब्लम नीडेड सॉल्विंग। Action, detail your actions, how you stepped up and motivated others, organized and guided, okay। तो
result explain the positive outcome of your initiative. Okay. So example है like absolutely in a recent cross-functional project to implement new software, I was a key team member, but not the project lead. We encountered significant resistance from users who were like hesitant to adopt the new system, due to unfamiliarity. My task, while not officially assigned, became to help bridge the gap between the development team and the end users to ensure a smooth transition and successful adoption. Okay. So I took the initiative to organize informal lunch and learn sessions where I demonstrated the new software features in a user-friendly way, uh, like address common concerns and gathered feedback directly from the users. I also created a simple quick start guide with like screenshot to supplement the official documentation, which I shared widely. So I acted as a liaison, relaying user feedback and pain points directly to the development team, ensuring their concerns were heard and addressed in subsequent updates. As a direct result of these efforts, user adoption rates increased by 30% within the first month, and the overall feedback on the new system became overwhelmingly positive. So it demonstrated the power of clear communication and proactive support in driving change within the organization. Okay. Fifth question is like questions for the interviewer. ये हमें पूछना है basically. Type, situational engagement, interest, strategic thinking, हाँ. और goal क्या है, ठीक है? To gauge your genuine interest, your preparation, and your critical thinking skills. What to avoid, saying no, asking questions about salary or benefits, ये तो बहुत common, ये interview में मत पूछा करो. Or asking questions easily found on the company website. Okay. Okay. So role interview, take types of question to ask. Like, what does a typical day look like for someone in this position? मतलब आप अपने बारे में आप पूछ रहे हो, आपकी जो पोजीशन जो आप जिसके इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो आप उससे पूछ रहे हो कि मतलब इस पोजीशन में कैसा दिन जाता है लोगों का, ठीक है? What are the biggest challenges someone in this role might face in the first 6 to 12 months? Company vision क्या है, ठीक है? What excites you most about the company's future? Or how does this role contribute to the company's overall mission? ठीक है. Team culture. How would you describe the team culture here? What opportunities are there for like professional development? Also, I mean, I'm sorry, I think आपने मैं मतलब ये if you are in an interviewer ना, तो वो इस तरीके से आपको पूछने हैं वो चीजें, ठीक है? What opportunities are there for professionalism development within the same? Or interview process, what are the next steps in the interview process? What when can I expect to hear about a decision? ठीक है. तो ये सारे बेसिकली इंटरव्यू जो ले रहा है ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पूछना होता है, ठीक है? कि व्हाट डू यू हैव टू आस्क आस्क बेसिकली, कि लास्ट में आपको क्या पूछना होता है ना, होता है ना कि जब इंटरव्यू आपसे पूछता है कि एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आप नो और ये सब मत बोला करो, सैलरी की बात मत किया करो, आप ये सब पूछ सकते हो ना कि इस पोजीशन में कैसा दिन जाता है ना, और क्या विजन है कंपनी का, टीम कल्चर कैसा है ना, बस ये सब. Yes, thank you for asking. I have a few questions. Firstly, what would you say are the biggest challenges and opportunities for someone in this digital marketing role within the first 6 to 12 months? Secondly, how would you describe the team culture here at ABC? And how does the team typically collaborate on projects? Finally, what are the next steps in the interview process? And when might I expect to hear about a decision? So these were the things, okay, in every interview. तो की टेकअवेज फॉर बिहेवियरल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस. स्टार मेथड हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कंसाइज स्ट्रक्चर. आप वो स्ट्रक्चर फ्रेम करो अपने आप अपने बारे में. प्रिपेयर स्टोरीज, ओके, लाइक हैव 5 to 7 एग्जांपल्स फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस रेडी टू अडेप्ट. रट्टा एकदम रट डालो कि हाँ ये 6 7 एक्सपीरियंस है, और आप उसको अपने अकॉर्डिंगली जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे फिट करते रहना. लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग स्किल द इंटरव्यूअर इज टेस्टिंग. ठीक है, ध्यान से सुनो इंटरव्यूअर पूछ कर रहे. बी ऑनेस्ट, योर पर्सनैलिटी शुड स्टिल कम थ्रू. और प्रैक्टिस, ठीक है, रिहर्स योर आंसर्स अलाउड.
ओके, तो ये हमारा मॉक इंटरव्यू सेशन खत्म हो गया है। ओके, तो आई होप these last 3 weeks have provided you with invaluable tools, insights, and confidence to excel in your job applications and navigate the professional world. Remember, the language is a powerful tool. Okay, like use it strategically, professionally, and always with confidence. Thank you so much for joining me in on this journey, and keep learning, keep growing, and I wish you all the very best in your career endeavors. Okay, so this is not exactly a farewell. Actually, like I'll take some like few sessions. Okay, till it reaches 30th day. All right, thank you so much for joining, guys. See you tomorrow then. Bye bye.